Good morning viewers, welcome you all to my new video. In our today's video, we are going to discuss about the first part of third unit of Stay Hungry, Stay Foolish. Before this video, I have uploaded 4 videos. First 2 video of unit 1 and then another 2 video is about the unit 2 of Stay Hungry, Stay Foolish. And today we will discuss the third unit of Stay Hungry, Stay Foolish. Before going to the third unit, I would like to remind you, I would like to recall what we have discussed in our previous videos. In our previous video, in the first unit, we come across the birth of Steve Jobs, and he narrates how he was able to fight against the poverty, that he could not complete his college education. He was unable to give the fees of his college because his foster parents, they were the working class parents. They were unable, they showed their inability to give the fees of college dues, okay, and very difficultly he managed to continue his 6 months of college education, and after that he remained inside the college. He sit in the calligraphy classes and learn the beautiful calligraphy, and at that time he was unaware that how the calligraphy, learning calligraphy and knowing the new techniques of writing beautiful letters help in his further life. He was completely unaware at that time, but now when while delivering the speech in front of the student of Stanford University, he considered his past incident as one of the best incident of his life, because if that would not happen in his life, he was not in the particular position as a great successful one. Okay. In the second unit, we come across how he was able to establish a company named Apple with the help of his friend at the age of 20, and he achieved tremendous success in his life at the first 10 years of his entrepreneurship. Okay. And when he reached at the age of 29, that time he was fired from his own company. Okay. After getting fired from his own company, he able to establish another 2 companies known as NEXT and Pixar, and he also got tremendous recognition and success in his life. Okay. When he reached at the age of 35, that time in the circumstances, Apple brought NEXT, and he also joined Apple once again. Okay. And the software what he developed in NEXT became the core software of his company, core software of Apple. Okay. And here he just want to focus in one thing, that never settle in your life, never give up. Okay. Always try to move on. Okay. Always try to proceed and progress in your life. Okay. Life teaches us, life gives us various flaws, various negativity, but we have to focus in our aim, focus in our goal, focus in our ambition. Okay. And we have to work to get our ambition. We have to work to achieve our success. That is the message of Steve Jobs in that speech. Okay. And one of the most important thing he has a focus, that never settle in your life. If we settle, if you defeat in our life, then it will be very hard in our part to progress and proceed. Okay. If we try rigorously, then one day we will get success. Okay. This is all about, these are the things we have discussed in our previous videos. Okay. And today we will deal what and he, before the start of his speech, he confesses in front of the student that he is going to
give the example of his real life incident with real life incident with the example of 3 stories. Okay, first unit, the story of first unit is about his birth, and second unit is about his success and loss of his life, and third unit now we are going to deal with that, and this unit is dealt with his death. That means how a person narrates about his death, it is quite ridiculous. No, once he come across, he has a close encounter with death, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଦୁରାରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ, ନିଜର ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ ଥିଲା, ନିଜର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ବି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଥିଲେ. ଓକେ, ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ହେଇପାରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ এই থার্ড ইউনিট্রে বর্ণনা করছেন. তো বর্তমান আমি যা থার্ড ইউনিট কু যা, থার্ড ইউনিট্রে দেখা কোণ সবু তাঁর ডেথ বিষয়ে, ডেথ সহ যে এনকাউন্টার হয়েছিল তা বিষয়ে সে কোণ বর্ণনা করেছেন. ইউনিট 3 ওয়ার্ম আপ. In this section of the text, Jobs narrates his third story. Read the following unit of the text and note how he brushed with death. As the writer have told us that he is going to narrate 3 stories, and we have already discussed the 2 stories of his life, and this story, the unit 3, consists of the last story of the writer, which is all about death. In this story, in this unit, we come across how he has close encounter with death. Okay, let's begin with the text. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. That means here he want to say that how he remember his death every day, and remembering death puts him to choose the great work in his life. Okay, and he narrate his story like that. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as it was your last, someday you will most certainly be right." तो ये से कहूँ चाहूँगी कि 17 वर्ष बयसर जितेबाला थिले, दैट मीन्स जितेबाला से तांकर कॉलेज एजुकेशन रे पाद थापी थिले, एंड फर्स्ट 6 मास काल कॉलेज एजुकेशन परस्यू कला परे से क्विट कर जाइथिले. से समय रे से गोटे कोटेशन पढ़ी थिले, जो कोटेशन रे थिला कि जदि आमे प्रत्येक दिन को आमर शेष दिन हिसाब रे भाबिकी बंचिबा, निश्चित आमे दिने ना दिने ठीक हबा. ता माने डायरेक्टली कहबा को गले मनीष जीवन पाइछि तार मृत्यु सुनिश्चित. दिने ना दिने मनीष को मृत्युर मजा चाखिबा को पड़िबो. एंड आमे जदि कल्पना करिबा, आमे जदि भाबिकी चलिबा कि आज होछि मोर शेष दिन, तेबे आमे दिने ना दिने ठीक हबा. केमिति को गोटे दिन आम जीवन रे एमिति आसीबो जो दिन कि आमको ए धरा पृष्ठ छाड़ी की जीवाकू पड़िबो. द डे विल कम व्हेन वी लीव दिस मुंडेन वर्ल्ड. ओके, हियर व्हाई ही वाज मूव्ड बाय दैट कोटेशन, बिकॉज दैट कोटेशन गिव्स हिम वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, वन टाइप ऑफ एनर्जी to move forward in his life. That means by remembering, by keeping in mind such
quotation. He was sure that one day he will leave the earth. One day he has to wind up all his work, all his duty. That time he completely gives his focus on his work, not on any other thing. ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୋକସ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ସେ ଅଲଗା କୌଣସି ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡେଲି ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ନେସେସରି ୱାର୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ନେସେସରି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଅନ୍ନେସେସରି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ହିୟର ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇଚ୍ ଡେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁର ଲାଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଦେଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ମୋହ, ମାୟା, ଲୋଭ, ଓକେ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଅପସରି ଯାଏ। କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ कि मु ए सबू छाड़ी की बहुत शीघ्र जीवी बोली, एटा ही देखा जाए, जहाद्वारा कि आमे फोकस्ड हो जाओ, जहाद्वारा कि आमर कौन कंसंट्रेशनटा फिक्स्ड हो जाए। ओके, इट मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी एंड सिंस देन फॉर द पास्ट 33 years I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? तो सेम जिनिस को से जो मन रखिकी तांकर गोटे अभ्यास रे परिणत होता दीर्घ 33 वर्ष काल। दैट मीन्स नाउ ही वाज 50 years old while delivering the speech in front of the graduate student of Stanford University. Okay, since 33 years, last 33 years he used to stand in front of a mirror every morning and ask himself a single question. What was that question? If today were the last day of my life, जदि आजी मोर शेष दिन अटे, तेबे मु जो कामटा करिबाकू एबे बाहारुछि, कौन मु सेई कामटा करिबी ना ताठार आउ किछि बेस्ट काम करिबी ना ताठार किछि इम्पोर्टेंट काम करिबी जो कामटा को मते सारिबा निहाती आवश्यक। ओके, तो से जिनस उपरे से ध्यान केंद्रित करथले। इफ टुडे वेयर द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ वुड आई वांट टू डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू टुडे, एंड व्हेनेवर द आंसर हैज बीन नो फॉर टू मेनी डेज इन अ रो, I know I need to change something. Obviously answer no ही आसीबो, कहीं ना तमे जानी जीवो जेतेबेले आजी तमरो शेष दिन अछि, आजी संध्या बेले तमरो मृत्यु सुनिश्चित, तमे कौनसी कौन सिंपल काम हो कि कौनसी लाइट कामटा करिबो, निश्चित भाव में इंपोर्टेंट काम लाइफ रे जोटा थिबो ताकू वाइंड अप करिया पय तमे निश्चित चाहिबो। तो ऑब्वियसली ताको आंसरटा नो आसुतला, एंड से कहउतले जेतेबेले सीरीज रे नो आसुतला, माने डेली डेली तांकर आंसर निज मन भितर जेतेबेले नो आसुतला, से जानुतले ठीक बाटरे से अछंती, निश्चित भाव में आहुरी किछि चेंज करिवा को पड़िबो। दैट मीन्स आहुरी किछि इंपोर्टेंट काम करिवा को पड़िबो तांको। ओके, जहा द्वारा कि मृत्यु पूर्वरु तांको बहुत गुडा इंपोर्टेंट काम को कोन करिया को पड़िबो, शेष करिवा को पड़िबो। एहा करिबा द्वारा कोन बेनिफिट हला स्टीव जॉब्स को? स्टीव जॉब्स जेतेबेले ए जिनिसटा निज माइंड रे रखी कि काम आरंभ करूथिले, से समय रे से तांको लाइफ रो सबु इंपोर्टेंट वर्क को, ओके, हेवी वर्क को अधिक फोकस दउथिले, अननेसेसरी वर्क उपरे फोकस टाकू जमा भी दउन थिले। जेमिति कि से चाहुथिले कि मृत्यु पूर्वरु मो काम सारी की जीवी। एथरा हमको मने पड़ी जाए कौन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग रो लास्ट स्टैंजा कौन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दैट मीन्स I have to cover many miles before the end of my life, before the sleep, before the death. That means here he was concerned, here the Steve Jobs was concerned about his duty, his work before his death.
That's why he was able to focus on his work. Next, come to the second paragraph of unit 3. Remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life. That means I have told you that if you remember your death, if you come to know that your death is very near, that time you only focus on the important and the big choices of your life. You remain far away from the unnecessary decision, unnecessary stuffs of your life. And here also Steve Jobs chooses the big decision and important, very heavy and very valuable decision of his life, keeping aside all the unnecessary things. Okay, and he also said that this type of habit, remembering that I will be dead soon, is the most important tool. That means here he considered that habit as a tool, as an instrument. That means remembering death. That means we must have to remember our death each and every day, so that we will remain as encouraged, as means we always remain energized to complete our work. Okay, and death is the only truth of the universe. Okay, death को केही भी मना करी परिबे नाही, death को केही भी अस्वीकार करी परिबे नाही. तो ये जो टूलटा, दैट मीन्स ये जो हैबिट तांकर थिला मृत्यु को जैसे स्मरण करूथिले, कहले एई हैबिटटा ओके तांकु सब बड़े एनकाउंटर करूथला. दैट मीन्स तांकु सब बड़े प्रवर्ताई की रखुथला, सब बड़े फोर्स करूथला, कोन आउ हेल्प भी करूथला कोन करिया पई, मेक द बिग चॉइसेस इन लाइफ. लाइफ रे बिग चॉइसेस नवा पाई. दैट मीन्स बिग डिसीजन नवा को से सहाय्य करूथला. काहेकि से जानि जाई छन कि मु मरि जीवी, गोटे दिन मरि जीवी, ता पूर्व मो लाइफ रे जो इंपोर्टेंट वर्क अछि ताको मु समाप्त करी कि काहे कि न मु मरिबी. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. It is a very important thing, that because almost everything, that means when you recollect, when you remember, when you have a close encounter with death, that time everything unnecessary thing remain fall apart. That means just fall away in the face of death. What कौन सबू मृत्युर सामने कौन अपसरी जाए, कौन मनीष भूली जाए, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, आमर जो आशा आकांक्षा जो थाए, आमर मोह माया भल पाइबा सबू थाए, सबू मृत्यु सामने फिका पड़ी जाए. ओके, एंड जो आमर फेलुअर थाए, डर थाए, आमर विफलता थाए, ये सबू मृत्यु सामने तार कौन सी औकात न थाए. ओके, because almost everything, all external expectation, all pride, all fear of embarrassment or failure, विफलता मनीषर जो प्राइड थाए, गर्व थाए, अहंकार थाए, एक्सपेक्टेशन थाए, लोभ मोह माया भल पाइबा जहाँ थाए, मनीषर फेलुअर जो थाए, मनीषर एम्बारासमेंट जोटा थाए. ओके, जोटा कि से जो भाया परिस्थिति जोटा कि सामना करि पारे नाही. ओके, से सब जिनिस ऑल जस्ट फॉल अवे इन द फेस ऑफ डेथ. मृत्यु सामने सबू अपसरी जाए. ओके, लिविंग ओनली व्हाट इज ट्रूली इंपोर्टेंट. ए सबू ऊपर आमर ध्यान हटि जाए, केवल देखा जाए इंपोर्टेंट जिनिस. ओके, remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. एटा बहुत ब्यूटीफुल मेसेज स्टीव जॉब्स स्टूडेंट मानू को दौछंती तांका स्पीच रे कि remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. तमे जेते बेले मृत्यु को स्मरण करि बसिबो, सेते बेले तम पाखरे आउ किछि हरेबा पाई नथिबो. कोन हरेबो? तमे संपत्ति हरेबो कि भल पाइबा हरेबो कि निजर फेलुअर टाकू तमे हरेबो, डर टाकू तमे हरेबो कि तमरा प्रॉपर्टी टाकू हरेबो, ना तमरा बैंक बैलेंस को हरेबो, ना तमरा पैसा को हरेबो. कोन हरेबो? तमे तो जीवन को हरिया पई जाउछ आगु. तो सबुठु मूल्यवान दुर्मूल्य जिनिस जोटा अछि कि तमरा तो निश्वास प्रश्वास चलिबो नाही, तमे पृथ्वी रे आउ रहिबो नाही कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एन्जॉय करिबा पई.
तो आउ एठी तुमर मजा रहिबा कौन रहिला कौन करिवो तो जितेबेले मनुष्य मृत्यु को से गोटे जिनिस शिखिथिले कि रिमेम्बरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आमे जितेबेले मृत्यु को मन रखिबा से जिनिस आमे जितेबेले ट्रैप हेकी था आमे जितेबेले संसार रे रहू आमे गोटे ट्रैप हे जाऊ जनता रे फसिगला बेले आमे लागे आमे गोटे फांस रे फसिगला लागे को फांस रे भल पाइबा मोह माया संपत्तिर लोभ मटेरियलिस्टिक लव द्वारा आमे ट्रैप हे जाऊ ओके एंड जितेबेले आमे डेथ को रिमेम्बर करिबा रिकॉल करिबा मृत्यु को मन पकईबा से समय रे कौन हो आमे मटेरियलिस्टिक लव ठारू मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट ठारू आमे बहुत दूर रे रहिबा तो एठी तांकु सेम जिनिसटा हेइथला कोन से मटेरियलिस्टिक लव ठारू बहुत दूर रे थिले जहा द्वारा कि से ब्यूटीफुल माने फेमस वर्क और बिग चॉइसेस लाइफ रे नउथले एंड वेरी इंपोर्टेंट वर्क लाइफ रे करूथले एंड ए जो सब गोटे थिंकिंग थाए आमर थाए आमको डर लगे सब बड़ जिनस आमर जो डरटा थाए हरैबार डर जेकोसी जिनिस को लूज करिवार डर निज ठारू से जिनसटा दूरे जीवो ओके मो ठारू से जिनसटा दूरे जीवो एई जो भयटा थाए एटा सब बेले आमको अधिक सप्रेस करिकी रखि थाए ओके आमको बांधिकी रखि थाए ओके तो जिते बेड़े ये कहले मु जिते निज मृत्यु को मन पकई दउथली स्मरण करी दउथली सेतेले मते हरैबा पई आ किछि ही नथिला कौन जिनसटा को मुझे हरैबी क्या मुझे सब दुर्मूल्य जिनस जीवन को हरैबा को जाऊँगी आउ मो पाखे रहिला कौन जे मुझे हरैबी ओके यू आर ऑलरेडी नेकेड देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट तो मृत्यु सामने तमें संपूर्ण भाव में नेकेड हो सारी दैट मीन्स डेथटा तुम लाइफ रो रियलिटी नेकेड हो सारी मीन्स डेथ तुम लाइफ रो रियलिटी को सामने पकई देछि दैट मीन्स तुम मोह माया कौन अच्छी से सब तुम सामना को आसी जाइए ताकू तुम कौन कर साइड करदेव ओके एंड देयर इज नो रीजन टू फॉलो योर हार्ट तो ये कौन सी जिनिस ना मृत्यु सामने तुम तुम कौन हृदय शुणव से बेले तुम केवल तुम विवेक शुणव तुम मस्तिष्क तुम विवेक जहाँ कह सेटा ही शुणव जिते तुम मृत्युर पाखापाखि आसीज तो ये मनुष्य जितेबाला ता विवेक शुणव से निश्चित भाव से ग्रेट वर्क कर निश्चित भाव लाइफ रो बिग बिग डिसीजन टाकू नब एंड बिग बिग चॉइस टाकू से पिक कर जहाद्वारा कि तापाई बहुत इजी हम सफलता पाइबा पाई थर्ड यूनिट रो नेक्स्ट आउ 7टा पैसेज रहिला सेटा को आमे नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट 2टा हो कि 3टा वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा काहे कि ना वीडियोटा बहुत लेंदी हो जीवो तमनको बोर लागिवो प्रत्येक यूनिट्र जो इंडिविजुअल दीटा वीडियो 3टा वीडियो अच्छी सेटा को देखिबा परे तमे तुम टेक्स्ट बुक को भी निश्चय पढ़ ओके टेक्स्ट बुक पढ़िले ही तमे जानी पारिबो प्रकृत जिनिस कौन फर्स्ट वीडियो को देख वीडियो को माइन्यूटली देख सुन कौन कौन कह जाउची सेटा को ध्यान रे रख तापर इमिडिएटली वीडियो देखिबार इमिडिएट परे तमे टेक्स्ट बुक पढ़ी दियो जो पोर्शनटा पढ़ाई जहाँ द्वारा कि तुम माइंड रे कंप्लीटली प्रिंट हेकी रही जीवो कौन डिस्कशन करा जाइछि वीडियो रे ओके एंड वीडियोटा कंप्लीट देखिबा परे कमेंट सेक्शन रे निजर क्वेश्चन टाकू निजर डाउट टाकू निजर क्वेरी टाकू निश्चित भाव रे लिखिबो ओके जहाँ द्वारा कि तमे तम मनर थिबा डाउट टाकू रिवील कले ही जाए कि मु तमर डाउट टाकू क्लियर करि पारिबी ए वीडियोटी जदि तुमको पसंद आसिला तेबे निश्चित भाव में लाइक करने को भूलिबो नाही सांग मानक सहित शेयर करने को भूलिबो नाही और शेष रे कमेंट दबो।